हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन सी चैप्टर नंबर 12 एंड 16 की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सोशल साइंस सेक्शन सी चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टी मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो होती है उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं, और रीजनल पार्टी मतलब जो स्टेट लेवल पर होती है उसको बोलते हैं अपने रीजनल पार्टीज। तो उसके बीच का डिफरेंस बिटवीन बात करेंगे। द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव सिक्योर्ड मिनिमम 4% वोट। कितना? जो मिनिमम सिक्योर कर सकते हैं 4% वोट एटलीस्ट द 4 स्टेट के अंदर इन द प्रिसाइडिंग इलेक्शन में। जबकि यहाँ पे इन द इलेक्शन द रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज which have secured the minimum 4% vote at least in the one state in the preceding election. Next, these parties have mass base in the large number of state and take part in the politics. किसमें part ले सकते हैं? Politics. And these parties have the mass base in at least one state and take part in the politics at the state level के ऊपर. Next, their ideology ब्रॉड बेस एंड द डील विद द नेशनल इश्यूज। जब में इसमें नैरो बेस आते हैं एंड दैट रीजनल इश्यूज। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, CPI, CPIM, BSP, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी आर द रिकॉग्नाइज दैट नेशनल पार्टीज। जबकि रीजनल पार्टी में आएगा DMK, AIADMK, अकाली दल, तेलुगु देशम एक्सेट्रा पार्टीज, जो किसमें आती है? रीजनल पार्टीज में आती है। यहाँ पे भी आप 1-2 पार्टी लिख दो, कांग्रेस, BJP, NCP एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द प्रिंट मीडिया इज द ओल्डेस्ट मीडिया विच वॉज इन एक्सटेंस इवन व्हेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेयर नॉट इन्वेंटेड। तब नहीं हुआ था, तब की बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की। And electronic media are the modern media which were invented in 20th century में। प्रिंट मीडिया में आते हैं न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। जबकि इसमें आता है रेडियो, TV, फिल्म एक्सेट्रा। द न्यूज़ आइटम्स एंड द न्यूज़ रिपोर्ट, एडिटोरियल, आर्टिकल्स आर पब्लिश प्रिंट फ्रॉम दैट कैन बी रीड ओनली। बराबर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ब्रेकिंग न्यूज़, पैनल डिस्कशन, लाइव टेलीकास्ट एक्सेट्रा, वो यहाँ पे हो सकता है। और प्रिंट मीडिया सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही रीड कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलिटरेट पर्सन भी रीड कर सकते हैं, मतलब समझ में आ सकता है। दीज आर रिगार्डेड टू द फोर्थ कॉलम डेमोक्रेसी एज द क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मिसडीड्स ऑफ द ऑफिशियल्स। These two are the regarded of the fourth column of democracy as there to discuss and criticize the policies of the government and expose the misdeed in the officials. नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। द वोटर्स कीप डेमोक्रेसी अलाइव। क्योंकि आपको पता है कि भाई इलेक्शन इज ए इम्पोर्टेंट फीचर्स है डेमोक्रेसी का, and it provide the opportunity to the people's voter elected their government. The voter exercise their right to vote, elected their representatives. From among the elected representative of the political parties that has secured the majority of seats from the governments. Next, question number 4. Informations broadcasting media are highly effective in the cultivating पब्लिक ओपिनियंस। तो इसका आंसर है क्या? फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, जो किसमें आता है? इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। द प्रिंट मीडिया रीचेज द पीपल थ्रू न्यूज़पेपर। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड पर्सपेक्टिव द वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ द रीच टू ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड एंड इट्स द न्यूज़ कवरेज, डिस्कशन, लाइव कवरेज, पॉलिटिक इवेंट्स एक्सेट्रा। Question number 5. Election is the barometer of democracy. Explain the statement. तो उसका आंसर क्या आएगा? Election is reflect the prevailing
The mood of the peoples, wherein the peoples decided either to retain ruling party or to change. Okay, next. इलेक्शन प्रोवाइड करता अपॉर्चुनिटी टू द पीपल्स को to evaluate कर सके परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट का. इसके अलावा लार्ज स्केल डिससेटिस्फेक्शन है, लीड टू द पीपल वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी इन पावर and electing the alternative party at the election. People endorse the policies and the programs of political parties by voting for or against in the elections, and thus election determine the features of direction of policy. मतलब एक डायरेक्शन बताता है इलेक्शंस. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 की बात करेंगे. Due to which reasons does the phenomena of changes in season occur? तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके, इन द इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो एंगल आता है 66.5 डिग्री. द नॉर्थन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइन द टूवर्ड्स द सन अल्टरनेटिवली ड्यूरिंग द ईयर्स. वर्टिकल सन रेज गिव द मोर हीट, days are longer, and so it is the summer. The sun rays are the slant over the hemisphere in the inclined plane to other directions, and जो slant sun rays होता है राइट, तो उससे क्या होगा, nights are longer and days are shorter, जिसको अपने winter बोला जाएगा. On 22 December जो सन रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आता है, जो लॉन्गेस्ट नाइट बोला जाता है. एंड ऑन द समर इज द साउथर्न हेमिस्फीयर, इन द विंटर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. और 21 जून को सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वहाँ पे डेज क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट चेंजेस ऑकर द वेदर विद द इंक्रीजिंग इन द एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल? The temperature and the pressure of the atmosphere decreases as we go higher from the sea levels. Generally the temperature decreases होता है by 1 degree और every 165 meters, मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी 1000 मीटर. जैसे अब जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जितना लेस होगा. Every layers of the air exert pressure over the underlying layer. As we go higher, the air layers are less in the number of and thin. So the air pressure decrease होते जाता है. That is why the air remains cool in the higher mountainous region पे. There is much heat on the plains के ऊपर, जिस तरह के नॉर्थन गुजरात. Hill station Mount Abu is nearby. Enjoy that are the during the summer. Altitude क्या होता जाता है आपका, इंक्रीज होते जाता है रेनफॉल की वजह से. Very high peaks of Himalaya remain snow-clad throughout the years. हिमालय के ऊपर as the dump rise high and the cool downs, and it gives the rain. In the mountainous region of the Assam and Meghalaya, there is a more rain with the increasing in height. Next question number 3. Give explanation about the trade winds. The permanent wind blowing from the tropical high pressure belt in the both hemisphere towards the equatorial low pressure belt, जिसको अपने बोला जाता है trade winds. This wind deflect the slightly due to the Coriolis force and the blow towards the equator के ऊपर. These winds blow regularly at almost uniform velocity होती है. They used to be the beneficial earlier to the ships run on the wind energy or sea routes for the trade. Since then these winds are known as the trade winds बोला जाता है. Okay, next, as these winds blow from the land and these are dry होती है, but when they are the pass over the vast water में से निकलता है Indian Ocean in the southern, the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in east, and they bring much the moisture and give the rain in India, right. Next question number 4. Explain the cycle of season of India. In India the weather remains almost same for every 2 month of period, जिसको अपने सीजन बोलते हैं. 6 सीजन है, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्ष.
वृषभ एंड शरद. एज द नियरर टू द ईच अदर हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द टू सीजन्स के बीच में. अगर बात करें जाए तो मेनली अपने पास 3 सीजन्स है, समर, विंटर और मानसून, दैट एवरी ईयर्स. ओके. एंड ये जो लोकेटेड किया गया दिल्ली का अकॉर्डिंग किया गया है. कोल्ड वेदर सीजन विंटर बोलते हैं उसको, दिसंबर टू फरवरी. हॉट वेदर सीजन समर, जिसको मार्च टू मई. साउथ वेस्ट मानसून, जिसको मानसून बोलते हैं, जून टू सितंबर. एंड रिटरिंग मानसून, जो अक्टूबर टू नवंबर. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. कोरोमंडल कोस्ट गेट्स रेन इन द विंटर. You the geographical region. The northeast winds blow over the India during the winter. These winds blow from the land over the most of the landmass, and these are generally dry हो जाती है. Mostly they do not bring any rain. But as the northeastern winds blow along the Coromandel coast, जो बे ऑफ बंगाल साइड टाउन होता है, and that happen to carry the much moisture. So they give much rain along the Coromandel coast. Okay, done. So that's यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.